गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्ट्रीट्स फॉर पीपल एंड नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उन्होंने ये दो चैलेंज निकाले थे, स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज और नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज। तो स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज में क्या है कि जो आपके स्मार्ट सिटीज़ हैं या जो हमारी सिटीज़ हैं जितनी भी जिनको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं अर्बन एरियाज़ में, वहाँ पर स्ट्रीट्स में पेडेस्ट्रियंस को हम अच्छी तरह से फैसिलिटेट कर पाएँ, क्योंकि अभी हमारा सारा फोकस रोड को अच्छा करने में लगा रहता है। लेकिन अब हम स्ट्रीट्स को अच्छा करेंगे ताकि जो लोग पैदल चलते हैं उनको कंफर्ट रहे, उनको आसानी रहे। दूसरा है हमारा नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज। नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज में क्या होगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सेफ नेबरहुड मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले बाहर खेलने के लिए। तो सिटीज़ में हम जो है बच्चों के लिए अच्छा जो है नेबरहुड जो है वो उनको देना चाहते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो जो है अब ये पहला चैलेंज जो है उसके विनर्स को अनाउंस किया गया है। एक ऑनलाइन इवेंट में विनर्स को अनाउंस किया गया है। तो ये कुछ जैसे विनर्स हैं, कुछ स्टेट्स, कुछ सिटीज़ हैं हमारी, औरंगाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोची। तो ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, इसमें कोई फर्स्ट सेकंड रैंक नहीं है, जस्ट अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज किया गया है। इन सिटीज़ को जो है 50 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे, और इसमें से 11 सिटीज़ को जो आइडेंटिफाई किया है, 11 सिटीज़ को इनको 50 लाख रुपए मिलेंगे। 4 सिटीज़ को मेंशन किया गया है कि इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज जो है आपके पेडेस्ट्रियंस की राइट्स को जो है वो अच्छी फैसिलिटी देना चाहते हैं, और उसमें इन 11 सिटीज़ ने और इन 4 सिटीज़ ने अच्छा काम किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों चीज़ें जो हैं इनके सेकंड सीज़न भी आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज का बताया था कि 3 साल का पायलट फेज़ पे इनिशिएटिव है, जिसमें हम चाइल्डहुड फ्रेंडली नेबरहुड बनाकर देना चाहते हैं इंडियन सिटीज़ में। तो अब इनका सेकंड सीज़न, अब फर्स्ट सीज़न का तो रिजल्ट आ गया कि कौन सी सिटीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया है। सेकंड सीज़न जो है उसमें उसको भी अब लॉन्च किया गया है। तो जैसे फर्स्ट जो फ़ेज़ था जिसका भी रिज़ल्ट आया कि कौन-कौन सी सिटीज़ ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, तो उसमें उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स देखी कि बहुत सारी जो सिटीज़ हैं उन्होंने 400 प्लस किलोमीटर्स जो है ऐसे कॉरिडोर बनाए जिससे कि स्ट्रीट्स जो हैं वो साइक्लिंग फ्रेंडली हो जाएँ। तो पेडेस्ट्रियंस के लिए भी और साइक्लिस्ट्स के लिए भी हम फ्रेंडली स्ट्रीट्स बनाना चाहते हैं। 60,000 प्लस सिटीज़न्स ने जो है उससे फीडबैक लिया गया। 600 प्लस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने इन सिटीज़ को सपोर्ट किया कि वो स्ट्रीट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब अगले स्टेज में कहा जा रहा है कि पार्किंग के ऊपर फोकस होगा, ऑन स्ट्रीट पार्किंग जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। हेल्दी स्ट्रीट्स बनाएंगे हम, पार्किंग पॉलिसी जो है ये सारी सिटीज़ बनाएंगी अब से। और फर्दर हम कैसे पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट्स की जो है वो हम मोबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टेज 2 में फोकस किया जाएगा। नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज जो है उसमें 25 सिटीज़ जो है वो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही हैं 7 मंथ्स के लिए। और इसमें जो है पब्लिक स्पेसेस, ऐसे पब्लिक स्पेसेस बना रहे हैं हम ताकि जो स्लम्स में या प्ले एरियाज़ बनाएंगे बच्चों के लिए। फिर आउटडोर वेटिंग स्पेसेस बनाएंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और आंगनवाड़ीज़ में, ताकि बच्चों को जो है इम्प्रूवमेंट हो सके, कि उनको बाहर खेलने के लिए जो है वो अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सके। तो इससे 1 लाख चिल्ड्रन को अभी तक बेनिफिट हो चुका है ऑलमोस्ट। और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाएं ताकि ऐसे काम को हम और आगे फॉरवर्ड लेकर जा सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डावोस एजेंडा 2022। तो आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है वो मीटिंग चल रही है आजकल, डिस्कशंस चल रही हैं। तो उसको जो है पीएम मोदी ने अभी एड्रेस किया है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एड्रेस दिया है। और इसमें जो है पीएम मोदी ने बोला है कि इंडिया में रिकॉर्ड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, 50 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इंडिया में काम कर रहे हैं। 2014 में सिर्फ 100 स्टार्टअप्स होते थे, अब इंडिया में 60,000 स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, जिसमें से 80 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न क्या होते हैं? $1 बिलियन से ऊपर जिनकी वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू, उनको हम यूनिकॉर्न्स कहते हैं उन स्टार्टअप्स को। फिर इंडिया में उन्होंने बताया कि लास्ट मंथ जस्ट दिसंबर में 4.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस की गई हैं यूपीआई द्वारा। तो डिजिटल पेमेंट भी जो है वो हमारी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर उन्होंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रोन्स को, स्पेस सेक्टर को, जियो स्पेशल मैपिंग को, इन सब को डीरेगुलेट किया है ताकि हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर ला सकें। तो ये डेवोस एजेंडा है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल मीटिंग होती है, आपको पता है, इस बार वर्चुअल हो रही है कोविड की वजह से। तो इस बार का थीम है उनका वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। तो इसमें बिजनेस लीडर्स, गवर्नमेंट लीडर्स, सिविल सोसाइटी लीडर्स, ये आपस में जो है वो डिस्कशंस करते हैं। और जो वर्ल्ड में जो भी एजेंडा है जिसके जैसे इस बार
एजेंडा है, वैक्सीन से रिलेटेड भी है, वर्किंग टुगेदर और रिस्टोरिंग ट्रस्ट जो है, कैसे हम पैंडेमिक से बाहर निकल सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस की जा रही हैं। तो अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके ऊपर डिस्कशंस की जा रही हैं, कैसे पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। इस बार 2022 में वो डिस्कशन की जा रही है। डेवोस क्या है? डेवोस एक सिटी है, एक स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर हर साल जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो प्रोफेसर क्लॉस श्वैब जो है उन्होंने 1971 में बनाया था, लेकिन उसका पहले नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। 1987 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया, और इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े गवर्नमेंट लीडर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक नेटवर्किंग इवेंट है बेसिकली। हर साल जो है ये अभी जनवरी या फरवरी के टाइम पर, खासकर जनवरी में जब सर्दी होती है तब ये इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बहुत सारी रिपोर्ट्स भी निकालता है, जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है रविदासियास। तो अभी जो है पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे थे 14 फरवरी को होने थे, उसको पोस्टपोन कर दिया है ईसी द्वारा, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बोला कि 14 फरवरी को गुरु रविदास जयंती है, और उस टाइम पर जो रविदासिया कम्युनिटी है पंजाब में, वो वाराणसी ट्रैवल करती है बहुत लार्ज नंबर में, और वो वोट नहीं कर पाएंगी। तो ईसी ने जो है इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके फरवरी 20 को जो है वो अब इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, तो जो ये वाराणसी जाते हैं रविदासिया कम्युनिटी, मोस्टली ये डेरा सचखंड बलान है जलंधर में, वही ऑर्गेनाइज करते हैं एक स्पेशल ट्रेन, और वो रविदासिया कम्युनिटी के मेंबर्स को वाराणसी लेके जाते हैं। ठीक है, तो रविदासियास कौन है? तो ये एक दलित कम्युनिटी है जो कि दोआबा रीजन में रहती है पंजाब के, और 12 लाख के करीब जो है इनमें इनकी फिगर है। ठीक है, तो जो डेरा सचखंड बलान है, जो इनका डेरा है बेसिकली, वो बाबा संत पीपल दास जो है उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में उसको फाउंड किया था। अब वैसे तो ये रविदासिया कम्युनिटी जो है वो सिखिज़्म से कनेक्टेड थी, लेकिन 2010 में इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक सेपरेट जो है वो रिलीजन बनाएंगे। इन्होंने अपना सेपरेट रिलीजन बना लिया रविदासिया, और गुरु रविदास की जो है टीचिंग्स को ये फॉलो करते हैं। तो गुरु रविदास जो थे, आपको पता है कि भक्ति मूवमेंट के टाइम पर 15th और 16th सेंचुरीज में एक मिस्टिक पोएट थे और पोएट सेंट थे। तो अब 2010 से क्या हुआ है कि डेरा सचखंड बलान ने ये भी डिसाइड किया है कि वो अब गुरु ग्रंथ साहिब जी को नहीं, बल्कि अपनी खुद की एक ग्रंथ बनाएंगे। ग्रंथ है उनकी अमृत बानी, जिसके अंदर गुरु रविदास के हिम्स जो हैं उसको रिकॉर्ड किया है, उसी को वो अपना जो है वो ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, तो उनके टेम्पल्स में और उनके गुरुद्वारा में ये अमृत बानी ही रखी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है द ग्रेट रेजिग्नेशन। तो आपको पता है कि 2020 में जब जो है बहुत ज़्यादा रेजिग्नेशंस हुए हैं, लेकिन 2021 में क्या हुआ कि 4.5 मिलियन वर्कर सिर्फ नवंबर 2021 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी जॉब से। और पूरे अगर हम 2021 की फिगर्स को लें अमेरिका में, तो 75.5 मिलियन लोगों ने रिज़ाइन किया। ठीक है, तो अब देखा गया है कि जो लो वेज वर्कर्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिज़ाइन कर रहे हैं, खासकर जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, हेल्थ केयर में, सोशल असिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, वो वर्कर सबसे ज़्यादा रिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ये ग्रेट रेजिग्नेशन? इतने लोग क्यों मास रेजिग्नेशंस दे रहे हैं? तो पहला तो ये है कि वो घर पर जो जब से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, तो इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ा दिया गया कंपनीज़ द्वारा कि वो बर्न आउट हो गए। तो इसलिए उनको इतना ज़्यादा काम जो मिला उससे वो थक गए, और वो अब एक मोर स्टेबल प्रोफेशन की तरफ जो है वो मूव करना चाहते हैं, वो इतना वर्कलोड नहीं लेना चाहते। तो इतने लोगों ने जो है वहाँ से अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। फिर अब इसमें ये भी देखा गया कि कंपनीज़ जो है वो भी घबरा गई कि अगर ऐसे बहुत ज़्यादा रेजिग्नेशंस होंगी तो उनकी तो जो है कंपनी को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब कंपनीज़ जो है वो ज़्यादा सैलरीज़ और ज़्यादा बेनिफिट देने का उन्होंने शुरू किया है। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएस में ही नहीं है, इवन यूरोप में और इवन इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो क्योंकि जब से ग्रेट रेजिग्नेशन स्टार्ट हुआ, तो इंडिया की कंपनीज़ जो है उनको भी लगा कि इंडिया में भी ये ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, तो उन्होंने हायरिंग जो है वो बहुत बढ़ा दी। तो सिर्फ 2021 में ही 1.7 लाख पीपल को जो है हायर किया गया। और एक सर्वे किया गया सितंबर 2021 में अमेज़ॉन इंडिया द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि देखा गया कि 51% जो जॉब सीकर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बाहर की जॉब्स जो हैं, जिसमें उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो वैसी जॉब ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग अपनी जॉब से, अपने काम से तंग आ गए हैं,
और वो न्यू एवेन्यूज़, न्यू ऐसी जगह पर वो जाना चाहते हैं जो कि थोड़ी स्टेबल है, उनकी जो है वर्क लाइफ बैलेंस को वो ठीक रख रही है, और उनकी प्रोफेशनल और उनकी पर्सनल लाइफ में जो अच्छा बैलेंस उनको जॉब करके देती है। ये उनको कैसे रियलाइज़ हुआ? जब वो घर पे बैठे कोविड के टाइम पर, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि घर के साथ हमको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा जॉब का। तो जैसे ही अब आप देखोगे कि वर्क फ्रॉम होम को जो है बहुत सारी कंपनीज़ ने जब वापस लिया, जब कहा कि अब ऑफिस वापस आओ, तो बहुत से जो है आपके जितने भी एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने, जो कि नहीं चाहते थे वापस जाना, क्योंकि उनको घर पे रहने घर पे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ठीक लगने लगा था, तो उन्होंने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये ही एक बहुत बड़ा रीज़न था ग्रेट रेजिग्नेशन का। तो ये ट्रेंड अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, और कंपनीज इसके लिए क्या है, लेबर फोर्स को रिटेन करने के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स और पर्क्स जो है वो अनाउंस कर रही हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है 5G थ्रेटनिंग एयरलाइन सेफ्टी। तो अभी यूएस की बहुत सारी एयरलाइंस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्होंने बोला है कि यूएस ने भी रिसेंटली 5G का मिड बैंड जो है, वो मिड बैंड स्पेक्ट्रम की जो ऑक्शन की थी, और उसकी वजह से जो है AT&T और वेरिजोन, वहाँ की टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, उन्होंने 5G सर्विसेज स्टार्ट की हैं। तो जो ये आपकी एयरलाइन कंपनीज हैं, वो ये कह रही हैं कि उनके 5G सर्विसेज की वजह से उनके ऑल्टीमीटर जो है उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस आ रही है, और उससे एयरलाइन सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 5G क्या है। तो 5G जो है वो 3 बैंड्स में काम करता है, लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। लो बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि आपकी स्पीड तो कम होती है लेकिन कवरेज ज़्यादा होती है, ठीक है? और मिड बैंड स्पेक्ट्रम में कवरेज भी जो थोड़ी-सी कम होती है, लेकिन लो बैंड स्पेक्ट्रम के मुताबिक स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। हाई बैंड स्पेक्ट्रम में कवरेज तो बहुत ही छोटी होती है, बहुत कम होती है, लेकिन स्पीड बहुत हाई होती है, जैसे कि 20 जीबीपीएस तक की स्पीड आ सकती है हाई बैंड स्पेक्ट्रम में 5G में, ठीक है? तो हुआ क्या अभी कि यूएस ने मिड रेंज 5G बैंडविड्थ को जो है वो आपके ऑक्शन किया था, जो कि 3.7 से 3.98 गीगाहर्ट्ज की रेंज में थे। लेकिन जो जिसको हम कह सकते हैं कि सी बैंड में उन्होंने जो है ऑक्शन स्पेक्ट्रम किया था 5G का। लेकिन हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो ऑल्टीमीटर्स हैं जो कि इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे एयरप्लेन्स में, वो 4.2 से लेके 4.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज में जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो ऑल्टीमीटर्स क्या होते हैं, ऑल्टीमीटर्स वो होते हैं कि जो एयरप्लेन में बताते हैं कि वो जो एयरप्लेन है वो कितनी हाइट पर जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो उसी के बेसिस पे ही, उसी के ही ऑल्टीमीटर की रीडिंग्स के हिसाब से ही लैंडिंग की जाती है, या फिर जो विंड शीयर होते हैं, विंड करंट होते हैं, उसको जो है पता लगाने का काम भी ऑल्टीमीटर करते हैं। तो अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो फ्लाइट कैसे उड़ेगी, ठीक है? तो जो ये फ्लाइट जो कंपनीज हैं, जो यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो इन्होंने भी ये बोला है कि ये 5G टेक्नोलॉजी जो है ये इंटरफेयर कर सकती है उन इंस्ट्रूमेंट से जो कि ऑल्टीमीटर्स को में लगे होते हैं, ठीक है? तो अब ये क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसी इंटरफेरेंस क्यों हो रही है? क्योंकि जो है जब बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, जो ये जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होती रहेगी उतनी ज़्यादा फास्ट सर्विसेज होंगी, ठीक है? तो आपका जो जब आप मिड रेंज मिड बैंड स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं, तो आपका इंटरनेट की स्पीड या फिर जो आपकी डेटा सर्विसेज जो है वो फास्ट हो जाती है। तो जब फास्ट सर्विस होंगी तो ज़्यादा के साथ ज़्यादा उसकी यूसेज बढ़ेगी। जब ज़्यादा यूसेज बढ़ेगी तो आपके जो है ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा। ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपके इंटरनेट का ट्रैफिक या डेटा का ट्रैफिक, उससे ज़्यादा जो है आपके इंटरफेरेंस आएगी ऑल्टीमीटर्स में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करना शुरू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपके ऑल्टीमीटर में और ज़्यादा जो है इंटरफेरेंस होगी, और उसमें प्लेन्स की जो है सेफ्टी पे खतरा हो सकता है। लेकिन ये आज तक कहीं ऐसा हुआ है? तो यूरोपियन यूनियन जो है वो भी इसी के आसपास की फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी का जो है 5G यूज़ कर रहा है, बट अभी तक ऐसा उनके साथ नहीं हुआ कि उनके जो है एयरप्लेन्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हुई हो, या फिर ऑल्टीमीटर उनके कॉम्प्रोमाइज़ हुए हों, ठीक है? इवन फ्रांस जो है वो भी जो है 3.6 से 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक की जो है स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहा है अपने 5G के लिए, और जो है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि क्योंकि ऑल्टीमीटर्स की फ्रीक्वेंसी 4.2 से 4.4 तक होती है, तो इसलिए जो है फ्रांस में भी ये दिक्कत नहीं आई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया जो है वो 3.42 से 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की जो है फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है, लेकिन वहाँ पर तो ऐसी कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिली जिसमें कि उनके एयरलाइन सेफ्टी को वो खतरा हो। तो बहुत सी अलग-अलग तरह की थ्योरीज़ हैं, अ, बहुत से अलग-अलग तरह के आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, बहुत सी अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, बट हमें ये आइडिया होना चाहिए था कि ये इशू है क्या, ठीक है? और इसी के हमने जो है बहाने से ये
भी देख लिया कि 5G क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पंडित बिरजू महाराज जी। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने पंडित बिरजू महाराज जी की जो है वो डिमाइस पर जो है वो ग्रीफ जो है वो प्रकट किया है। तो पंडित बिरजू महाराज जी जो हैं उनको हम बिरजू महाराज भी बोलते हैं। और वो एक बहुत बड़े इंडियन डांसर, कंपोज़र, सिंगर हैं। और वो कालका बिंदादिन घराना के जो हैं कथक के डांसर हैं, ठीक है। तो वो महाराजा फैमिली जो है कथक डांसर्स की बहुत फेमस फैमिली है ये। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू जो है ये सब इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। उसी को ही जो है पंडित बिरजू महाराज जी भी बिलोंग करते थे, ठीक है। तो वो कथक केंद्र जो है उसके भी हेड रह चुके हैं। बहुत सारे अवार्ड्स मिले, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्म विभूषण, नृत्य चूड़ामणि अवार्ड, कालिदास सम्मान अवार्ड, लता मंगेशकर पुरस्कार, राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, ये बहुत सारे अवार्ड्स उनको पंडित बिरजू महाराज जी को मिले थे। और उनका जो है अभी रिसेंटली जो है वो डिमाइज हुआ है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Streets for People and Nurturing Neighborhoods Challenge. So these are two challenges which have been recently launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. So the first edition of these challenges have been launched, and the results of this Streets for People challenge have been announced. And even the second edition of Nurturing Neighborhoods Challenge has also been announced now. Okay, so about this Streets for People challenge, so the basic idea is that we want to make the streets of our cities pedestrian and cyclist friendly. That's why we have launched this competition between cities, namely Streets for People challenge. So now cities who are working to make their streets people friendly, cyclists friendly, we are awarding them with the resources, and we are encouraging them. And that's why the result of the Streets for People challenge have come out now, and 50 lakh rupees will be given to the 11 cities who have won this challenge. So these are the cities, of course they are not ranked in order, but they are just arranged alphabetically. So 11 cities will receive 50 lakh rupees from Ministry of Housing and Urban Affairs. And they have prioritized their pedestrians over, of course, the travelers on road. And we want to make our streets people friendly. That is what this Streets for People challenge is all about. Okay, and about the Nurturing Neighborhoods challenge, so this is basically a 3-year phased initiative in which we want to make our cities childhood friendly. So because the children play in their in neighborhood, we want to make these neighborhoods secure and safe. And we want to provide modern amenities in these neighborhoods. So this is the challenge for cities. For that also certain cities have been identified, and they will be they are just part of the pilot phase of this project. And in the second edition there will be a full scale challenge, and they will perform, the cities will be asked to perform into this particular challenge. Okay, so about this second season, so for both this Streets for People and for Nurturing Neighborhood challenge, the second edition has also been announced. So in Streets for People, in the first stage in which the winners have been announced, 400 plus kilometers of corridors were constructed in these cities, the cities which have been the winners. And these streets have been made cycling friendly now. 60,000 plus citizens were surveyed, and feedback was received from these citizens. 600 plus civil society organizations supported these cities in designing these streets and to make them cycling and pedestrian friendly. So now in the next stage, the focus would be on parking. Okay, so we want to make a healthy parking streets and parking policies. On street parking management would be there, and how we can ensure mobility of both pedestrians and cyclists on the streets, it will also be focused in the second stage now. Okay, in this neighborhoods challenge, in the Nurturing Neighborhoods challenge, 25 cities have been a part of this program since the last 7 months. Of course, this is a 3-year period, a 3-year challenge, so just 7 months have gone by in the first stage. And we are also preparing for the stage 2, in which more and more cities will participate, in which we will be identifying 10 winning cities. Okay, so in the first stage, over 70 pilot projects in neighborhoods have been identified, like creation of public
spaces in slums where children can play, age appropriate play areas can be made, and public toilet, nursing cabins can be made in such area, so as to make so as to facilitate our children in playing in the neighborhood. Okay, so about 1 lakh children have benefited, and in the next stage we want to create an institutional mechanism to take the this work forward in more cities. Okay, so now let us see the next topic, which is Davos Agenda 2022. So PM Modi has recently delivered the State of the World special address at the World Economic Forum's Davos Agenda. So while outlining the achievements of India, PM Modi has said that we have the record number of software engineers in India. About 50 lakh software developers are working in India. 100 startups were there in 2014, but now their number have grown to 60,000. Just last month, 4.4 billion transactions have been made at the UPI through UPI. So it is about our digital payments platform and how it is performing. We have deregulated drones, space, and geospatial mapping sector, and we have made some reforms in our outdated telecom sector also. And about this Davos agenda, so basically PM Modi has showcased the performance of India in the last few years, and this is what happens in the World Economic Forum Davos meetings. So Davos is located in Switzerland. Every year during the winters, this Davos agenda is conducted. It is basically a networking forum where business groups, government leaders, civil society leaders, they participate and talk or discuss around a theme. So like for this year 2022, I'm sorry for a typo here, it's 2022. The theme is working together, restoring trust. So it is about how we can come out of this pandemic situation and how we can facilitate all the countries of the world to come out of this situation. So it is also focusing upon public private cooperation, how businesses can cooperate with government and civil society, so as to ensure maximum development. So about this World Economic Forum, it is basically a networking event conducted every year at Davos, that is in Switzerland. So earlier it was called European Management Forum when it was formed by Professor Klaus Schwab in the year 1971. Later on in 1987, it was renamed to as World Economic Forum. So it was envisioned as a platform for resolving international conflicts, but later on it came out to be a networking event, and it also serves as a big think tank, and it releases certain reports like the Global Competitiveness Report, the Global Risks Report, and the Global Gender Gap Report. Okay, so now let us see the next topic, which is Ravi Dasias. So recently, after the request of several political leaders, the Election Commission has announced that they will be postponing the Punjab State Assembly elections to February 20th, because on February 14th, there is Guru Ravidas Jayanti, and in this part of the state, the this Doaba region of the state, people from Ravidasiya community travel to Varanasi on this very occasion. So they would not be able to vote on that day because they would be traveling to Varanasi. That's why EC was requested to postpone the elections, and that's why these elections have been postponed. This visit to Varanasi by the Ravidasiya community is facilitated by Dera Sachkhand Balan, which is located in Jalandhar. And this Ravidasiya community is basically a Dalit community uh, with a number of 12 lakh. They are about 12 lakh in number in this state. Uh, they are followers of Guru Ravidas, who was a mystic poet saint of the Bhakti movement in 15th and 16th centuries, and this Dera Sachkhand Balan, which is acting as the largest Dera of Ravidasiya community. It was founded by Baba Sant People Das in 20th early 20th century. Earlier, this Ravidasiya community was connected with Sikhism, but in 2010, this Dera announced that they would form a separate religion, this Ravidasiya religion, and they have even separated their Granth from the Sikhism. So Sikhism has this Guru Granth Sahib Ji as their Granth, but this uh, Ravidasiya community have formed this Amrit Bani. Amrit Bani is the Granth of Ravidasiya community. It carries 200 hymns of Guru Ravidas, and it is placed in all Ravidasiya temples and Gurdwaras. Okay, since 2010, of course.
So now let us see the next topic, which is the Great Resignation. So in 2020, resignation rates across the US plummeted due to fear caused by the pandemic. But in 2021, the situation got reversed. About 75.5 million people in America resigned in the year 2021, and in November alone, 4.5 million workers left their job, according to the US Labor Department. So mostly the low wage workers were not happy with their employers, and they belong to hospitality, healthcare, transportation, warehousing, etc. Sectors. And the reason given by them was mostly burnout due to the pressure of job. Okay, so what was happening is that people were asked to do work from home during this 2020 period. So they saw that they could give appropriate time to their families and to their work life. And certain companies, they increase the work pressure when their employees were working from home, so it caused burnout for them. And after the work from home situation was discontinued, and companies started inviting started calling their employees back to office, most of the workers were not willing to go back, because this they saw that they can work from home, and they would be able to maintain their work and personal life balance. And that's why they did not want to go back to their office. Most of the and other people or other workers wanted to move to a stable profession where there is a good work life balance. So that this has caused this great resignation. And this pandemonium is creating troubles for companies who have to incentivize their workers by offering them better benefits and higher salaries. So this is not just limited to US, but it is a global phenomena, and it is even witnessed in India also. So like in fearing this great resignation, the top 5 IT companies in India have hired about 1.7 lakh people in 2021 alone. Uh, a survey was conducted by Amazon India, and nearly 51% of the job seekers were looking. They found that more than 51% of job seekers were looking for opportunities in industries where they have little to no experience. So they just want to change their uh, work profile, even at the cost of getting low salaries. But this great resignation has caused a deep trouble for the companies, or the large companies who are reliant on labor force. Okay, so now let us see the next topic, which is 5G threatening airline safety. So chief executives of several US passenger and cargo airlines have warned that there will be catastrophic consequences if this 5G mid-band 5G services planned by the telecom companies of the US will be deployed. Okay, so US has launched this C-band 5G service, that is a mid-band 5G service. And the US federal aviation administration is saying that it could render a significant number of aircraft unusable. So before understanding this issue, we have to see what is 5G technology. So you know that 5G mainly works in three bands, that is the low, mid, and high frequency spectrum band. In low spectrum band, there is greater coverage but less speed. In mid-band spectrum, higher speeds are there, if we compare it with low band spectrum, but thus coverage of signals is reduced. Okay, in high band spectrum, there is extremely limited coverage, but there is extremely high speed, that is about 20 gbps. So what is happening in US? So US has launched this mid-range spectrum, mid-range 5G bandwidth, about 3.7 to 3.98 gigahertz range. It is called the C band. And US Federal Aviation Administration is saying that it could interrupt the functioning of altimeters. So altimeters are the instruments which are used to see how far above the ground an airplane is traveling. So based upon this altimeter readings, landings are made, or even detection of dangerous currents in the wind are made.
So these altimeters operate in 4.2 to 4.4 gigahertz range, and that's why the Federal Aviation Administration is fearing that this new 5G technology, because it is mid-range bandwidth, so there will be higher speeds. That's why there will be more traffic, more users would be there, and this can disrupt the operation of altimeters, because they are closer, they have closer range. If we compare it with 5G bandwidth, this mid range 5G bandwidth and altimeters are operating in a close range, so this could interrupt the frequency of altimeters. Okay, so is it true, is it an issue everywhere? So European Union is also using this mid-range 5G frequencies between 3.4 to 3.8 gigahertz, but of course it is not causing an issue because it is quite less than what US is rolling out. Okay, so even France is using this mid-range spectrum between 3.6 to 3.8 gigahertz, and it is far away from altimeters frequency of 4.2 to 4.4 gigahertz. So this is not causing any issue in France or Union for that matter. But if we see in South Korea, they are using almost similar frequency that the US is using, but there has been no report of interference with radio waves, and this South Korea is using this 5G technology since April 2019. So this is an issue between uh, this Federal Aviation Administration of the US and the telecom companies of the US. So this, we'll have to see what this issue, how this issue will be resolved in the next few days, and if this issue has any ground or not. Or maybe in the next few days or in the next few years, next few months, the telecom companies of the US will be asked to create buffer zones around airports, so that uh, around these airports this 5G mid-band 5G services would not be available, so that it does not hamper with the functioning of the altimeters. Okay, so now let us see the next topic, which is Pandit Birju Maharaj ji. So PM Modi has expressed deep grief over the passing away of legendary Kathak dancer Pandit Birju Maharaj. So he was simply known as Birju Maharaj. He was an Indian dancer, composer, singer, and exponent of Lucknow's Kalka Bindadin Gharana of Kathak dance. He belongs to the Maharaj family of Kathak dancers. So every most of the people belonging to this family, Shambhu Maharaj, Lachu Maharaj, Achan Maharaj, they are pioneers in their field. So they practiced Hindustani classical music, and Pandit Birju Maharaj also headed the Kathak Kendra of New Delhi. He was awarded several accolades, like in 1964 he was awarded the Sangeet Natak Academy Award. So several awards were given to him during his lifetime. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.